today let's start with chapter number 17, that is two levels of the government. Let's study about the two levels. State government first. Indian constitution is a federal form and federation means distribution of power. हम इसमें क्या करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में. So at present Indian Union comprises 28 states and 8 UT and the government at the state level is called state government, जो आपके entire state को देखती है. Right, then what is state legislature? According to provision made by the constitution, each state will have its own legislature, जिसमें आपका क्या include है, governor, legislative, assembly. In some state legislative council, union parliament is composed of two houses, council of states of or the Rajya Sabha and the house of people, that is Lok Sabha. So the upper house is called Vidhan Parishad और उसको legislative council भी बोलते हैं. State having legislative council, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Telangana, Karnataka. In November 2005, Andhra Pradesh has also revived its Vidhan Parishad or Legislative Council. Now, Parliament of India is bicameral in nature. Means bicameral means it is arch stone in the federal edifice. So, we can say that the upper house usually represent the unit on equal basis as it is custodian of the state, and the lower house represent people on the basis of population. Right? So here different states and capital has been given to you. You can read them. Now legislative council क्या है? It's a permanent house like council of state. Total number of member जो है वो exceed नहीं करते total number of member that in the legislative assembly. So in case no case be less than 40, about 1/3 of the member are elected by the member of legislative assembly. So we have state, we have Vidhan Sabha, Vidhan Parishad. Vidhan Sabha legislative assembly, Vidhan Parishad legislative council. Not more than 500 members, not less than 60 who are there, 1/3 of the membership of Vidhan Sabha and not less than 40. So 1/3 of the total member of the council shall be elected indirectly or by the electoral college. और 1/12 of the total member जो है वो आपके legislative council के होनी चाहिए, and the remaining member that is 1/6 of the total member of legislative council, उसको कौन nominate करेगा? Governor nominate करेगा, right? किसके basis पे? Literature, art, science और social service. Then we have Vidhan Sabha or Legislative Assembly. It is popularly elected house and it is real center of power in the state. So we can say that what is the composition? Legislative Assembly consists of members chosen by direct election on the basis of universal adult franchise. And the number of members shall not be more than 500 or less than 60. There are to be found special provision in respect to the states of Goa, Mizoram and Sikkim. So we can say that Goa and Mizoram have 40, Bihar 243, Madhya Pradesh 231, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya have 60 members. Like parliament, legislative assemblies are also elected for 5 years, right? So let's study about the period of time of how. So constitution makes provision regarding representation of scheduled caste, scheduled. Provision deals on nomination. जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उनका क्या होता है? नॉमिनेशन होता है, राइट? सो सिस्टम ऑफ सेक्रेट बैलेट इज फॉलो एंड नो वन कैन जज कि किसने किसे वोट कराए, राइट? इन ऑर्डर टू बी चूज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पर्सन मस्ट बी सिटीजन, और जो उसकी एज है वो लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज नहीं होनी चाहिए. व्हाट आर द फंक्शन कंसर्निंग बिजनेस ऑफ द हाउस? स्पीकर प्रिसाइड्स द मीटिंग. All bills passed by the Legislative Assembly, they are authenticated by the signature before they are sent to Legislative Council or sent for government. Right? Disciplinary function क्या होते हैं? Order maintain करता है हाउस में, uncontrolled label को क्या करता है? Order withdraw करता है. Men while speaking in the house are required to use dignified line. Now administrative function, speaker receive all petition and document, communicates the decision of the house and allow admissions of the visitor and press correspondence. Now control over the committee. जो स्पीकर होता है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है. He appoints chairman of all committee of the legislative assembly. Now functions of the anti-defection law. Under the anti-defection law, if any question arises whether a member of the legislative is subjected to disqualification or not. Position of the speaker, his great honor responsibility है. अगर vacant है, if he vacant his office immediately before the first meeting of the new essay. Right? Power and duties of state legislature. State legislatures have exclusive power, right, which are mentioned in concurrent list. आपकी concurrent list में mention है. In case of the conflict in central law and state law, the central law shall prevail. Now let's study about
ऑल द थ्री लिस्ट, फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट जिसमें आपके 7 आइटम्स आते हैं, दैट इज डिफेंस, आर्म फोर्सेज, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, करेंसी, कॉइनेज। स्टेट लिस्ट की हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ 66 आइटम जिसमें आपका पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन, local government, health, sanitation, agriculture, all are included, right? Next is concurrent list. It consists of 47 items such as criminal law, preventive detention, marriage, divorce, protection of wild animals, bird, adulteration, and food stuff. Now, relationship between Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. So, the Legislative Assembly occupies a dominant position while Legislative Council is secondary chapter. The relation between two houses, first is that control over money. इनका control है मनी बिल पे. नो मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, रिकमेंडेशन चाहिए होती है विद इन द पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसेप्ट. द असेंबली में एक्सेप्ट और रिजेक्ट सच अ रिकमेंडेशन. नॉन मनी बिल, अ बिल अनदर देन मनी बिल may originate either on the two houses of the legislature. If the bill is rejected, the council and more than 3 months elapse without a bill being what passed or the amended. Control over the executive. The Council of Ministers is collectively responsible to legislative assembly. Let's study about other power. Member of the Legislative Council do not participate in the election. Nearly 1/3 of the member of the councils are elected. In law making, जो legislative assembly है वो क्या enjoy करते हैं? More power than council. Then we have state executive, जिसका काम क्या होता है? लॉ को एग्जीक्यूट करना. गवर्नर क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, नॉमिनी है सेंटर का. कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, राइट. द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर. ही और शी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. एंड डू नॉट he or she is not the resident of the same state, जिसमें उसको गवर्नर बन. टर्म ऑफ ऑफिस 5 year. ही कैन बी रिमूवल, वो रिजाइन भी कर सकता है फ्रॉम द ऑफिस एट एनी टाइम. नाउ पावर एंड फंक्शन. लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, राइट. देन वी हैव एग्जीक्यूटिव पावर. एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर which is similar to those of the president. Governor appoints minister with the advice of the other minister, right? So we can say he communicate to the governor all decision of the council of minister. Legislative power क्या है? Governor summon कर सकता है session of state legislature, right? He address legislative assembly or both the house assembled together at the commencement of first session. Governor give assent to the bill and he can also withhold his assent. वो बिल को रिटर्न भी कर सकता है, वापस भी भेज सकता है, राइट. इफ इट्स विश 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो एग्जिट करते हैं इन द स्टेट. जो आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, स्कॉलर हो, ही कैन इशू ऑर्डिनेंस. भाई ये ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं. एंड इन केस ऑफ 6 weeks आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ द लेजिस्लेचर, they are not ratified by the state legislature. Now he may dissolve the Vidhan Sabha even before expiry of 5 years. On the advice of chief minister, constitutional breakdown हुआ या फिर डायरेक्टली अगर प्रेसिडेंट बोले तो आप क्या कर सकते हो? उसको हटा सकते हो. फाइनेंशियल पावर. नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द विधान सभा विदाउट प्रायर. आपको यहाँ पे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. किसका? गवर्नर का, राइट. सो द गवर्नर शैल कॉज टू लेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, वो सारे रिसेप्ट और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो शो करते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर में स्टैब्लिश अ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया. They said that fund is placed at the disposal of government for meeting unforeseen expenditure. Now, judicial power. The governor has the power to grant pardon as to suspend the sentence of any power. Appointment, posting, and promotion. All are the made by the governor in consultance with the High Court. Chief Minister and Council of Minister. Chief Minister is the leader of state legislative assembly. उसकी पोजीशन है वो किस पर डिपेंड करती है? Party is majority in the legislature, right? पार्टी की majority. The total number of ministers including chief minister cannot exceed 15% of total MLA, right? जो term होता है ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर कितना होता है? 5 years. जो रूलिंग पार्टी होती है MLA की वो क्या चूज करती है? देयर लीडर अमंग देयरसेल्फ. और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. Now law making process, passing a bill. So the policy of state government.
आर डिस्कस इन बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, और जो स्टेट लेजिस्लेटर होता है वो लॉ बनाता है ऑन द सब्जेक्ट दैट इज कंटेन्ड इन द स्टेट लिस्ट, एंड द असेंबली इज नॉट बाउंड बाय एनी डिसीजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ मनी बिल. द बिल इज सेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द एसेट. Right, so we can say that to introduce non-money bill, the concerned minister seek permission from legislative assembly. Important feature of the bill is refers to the standing committee, and again to restricted debates, they take place over the bill and the bill is passed, and then it is sent to the second house if one exit. Now, if the legislative assembly passes the bill once again, the bill is sent to the government for assent. Now यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्टर्ड बाय. कौन एडमिनिस्टर करता है यूनियन टेरिटरी को? प्रेसिडेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ. सेवरल यूनियन टेरिटरीज हैव बिगन द स्टेटस ऑफ स्टेट, जैसे आपकी दिल्ली हो गई, पुडुचेरी, गोवा. दे ऑल्सो मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. पुलिस, हेल्थ, कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब दोनों के, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो कॉन्करेंट हो, दोनों लिस्ट पे काम करते हैं. और आपकी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है इसमें 17 मेंबर हैं. राइट. ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर. और उनको कितने साल के लिए इलेक्ट करा जाता है? 5 years के लिए. एंड इट इज नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और उसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. राइट. सिविल सर्वेंट्स आर सिलेक्टेड थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे. और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे डू नॉट चेंज विद चेंज इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. जो कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वेरियस लेवल पे, दैट देयर इज नो गवर्नमेंट इन पावर. किसी भी तरीके की कोई भी गवर्नमेंट पावर में नहीं होती. Civil servants analyze problem and collect important policies, and the secretary of each ministry department, other state official, they are the civil servant, they are implement. इनका ही जो decisions है उनको हम क्या करते हैं? Implement करते हैं. Right? The member of the opposition play the role of questioning, and the legislative assembly is not only any place where opinions are expressed about the work of government. जहाँ पे अपने opinions रखते हो काम के बारे में. And we find newspaper, TV channels, magazine regularly taking about the function of the government. People organize meeting, rallies to voice their opinion and they protest against the government. वो किसके लिए protect करते हैं? Protest करते हैं government के. Right? This is all in this chapter. Now let's move to the exercise. The dash can dissolve state legislative assembly. कौन कर सकता है? Governor. Dash is the upper house in the Uttar Pradesh. Vidhan Parishad. More than half of the member of MLAs are called majority. Members of dash can pass non-confidence motion against the state government. तो कौन पास करता है? Both. Legislative assembly भी और council भी. Minimum age to become MLA is 25. Right? Next is fill in the blank. State budget is presented by dash minister. कौन सा मिनिस्टर करता है? फाइनेंस, जो हमारी कौन है? श्रीता रमन. द चीफ मिनिस्टर इज द डैश ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो चीफ मिनिस्टर क्या होता है? हेड होता है. द डैश अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कौन अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ? गवर्नर. MLA are elected for the period of 5 years. The India Union consists of 28 states and 7 union territories. Now write T for true and F for false statement. First is state laws are made by the state legislature. It's true. Money bill can be introduced in legislative council only. False. Governor has discretionary power. True. Then in a democracy, public cannot express its opinion. False. Public तो क्या करती है? चुनते हैं, हम ही चुनते हैं अपने लीडर को. Civil servants are the permanent executive. It's true. Now answer the following question. Write a note on bureaucracy, administration. Right. Describe the procedure of passing bill. Power क्या है गवर्नर की? Then composition और power बतानी है आपको legislative council की. Describe the composition of state assembly. What are the function of chief minister and council of minister? Right. Describe the power of legislative assembly. Then mention 2 powers of the governor from among the legislature. What is bicameral legislature? Which state in India has bicameral legislature? आपको बताना है who is governed.
right? Head of the state, right? This is all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. Thank you.